So, a very good evening, everyone, and a very warm welcome to today's session. सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज के स्ट्रैटेजी सेशन में, जो एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन के लिए होने जा रहा है, that is Indian Institute of Management, Rohtak. So, all the viewers, they are most welcome, and I request everyone to join ASAP, because we are going to discuss the strategies and the various important facts and the important aspects of IIM ROHTAK. So I welcome everybody, और जितने भी हमारे जो प्रथम के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज जॉइन अस ऑन द पीआई ग्रुप. आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंसर्न्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी कमेंट्स हैं, प्लीज पुट इट इन द पीआई ग्रुप, क्रैश कोर्स 2022 पीआई ग्रुप. और जितने भी students who are attending this session who are not a part of Pratham family, I'll request you to basically put across your comments on the YouTube channel chats. उसमें अपने comments डालिए ताकि हम आपके एक-एक comments को पढ़ पाएं, एक-एक comments को scan कर पाएं, and finally we would be able to resolve all your queries. आपके जितने doubts हैं, जितने concern हैं, उसको हम address कर पाएंगे. So Pratham family के जितने students हैं, please connect with us on the PI chat group, Telegram PI group, and other students who are not yet part of Pratham family, please join us on the YouTube chat. Right? So guys, thank you so much for joining in. बहुत धन्यवाद join करने के लिए. And yeah, good evening Rudraksh, good evening Suman, Naman, good evening Aditya. आप लोगों का बहुत स्वागत है. Right? I hope you all are doing well. आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है. Okay, so I would like to first of all introduce you all, to our esteemed guest. ये हमारे guest भी हैं, हमारे colleague भी हैं, हमारे बहुत ही respected faculty members हैं, who are actually pioneer, who are actually experts in their own domain, in their own way. So I'll invite and I'll welcome Praveen sir. Praveen sir, welcome. बहुत स्वागत. Thank you. And sir, आपका presence इस session के लिए बहुत important है, because you are going to throw some light on the most ambiguous thing, that is the VA part, right? Absolutely, sir. Absolutely. VA एक ऐसी चीज होती है जिसमें maths में तो बच्चा कह सकता है सर 2 + 2 = 4, but VA में he is not very sure that what is the answer. Absolutely, sir. Welcome Praveen sir. Vidhi ma'am, a very warm welcome ma'am. बहुत स्वागत है आपका. Thank you so much. आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है मैम, because you are handling a section which is mathematics and which scares people most, right? Especially अगर IIM रोहतक की बात करूं, इसमें क्वेश्चन भले बहुत टफ ना हो, but the most important thing is managing time. Absolutely. 40 minutes में 40 questions कैसे करें, right? So welcome मैम, बहुत स्वागत है आपका. And Girish sir, once again welcome, बहुत स्वागत है. I'm sure sir, आपको देख करके जितने भी यहाँ पे joinees हैं, ठीक है, वो काफी खुश होंगे, because you're handling a section which student love most, right? Exactly sir. बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना सर, across examination, जितने भी entrance examination होते हैं, वो कहते हैं LR है तो जान है. They say this. So Girish sir, आपका भी बहुत स्वागत है, and I welcome you to this session. So students, I believe that you all have joined. And सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रवीण सर, विधि मैम एंड गिरीश सर, आज का दिन ऐसा है कि टुडे देयर वाज एन एग्जाम ऑफ आईपी. इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का पेपर भी था, बच्चों ने एग्जाम भी दिया है, वेदर दे आर फ्रॉम दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली. एंड एक चीज है कि हमें सबको मिलकर के बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करना चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जाम सीजन दे हैव रिटन द एग्जामिनेशन एंड अगेन दे आर अटेंडिंग फॉर एन strategy session. So kudos to them. Absolutely, sir. And in the morning, they have already attended one of the session, which was about the BBA session. Right? BBA so session. They've already attended that. Yes, sir. So once again, welcome everybody. बहुत स्वागत है. Now the thing is that we'll not taking much of your time. हमें अच्छे से पता है आप लोगों के बारे में कि आप लोगों ने आज एग्जामिनेशन दिया है. आने वाले कुछ दिनों में again you are writing the examination. 26 को आप AILET का एग्जामिनेशन भी लिखेंगे, IIM रोहतक का भी एग्जाम लिखेंगे, राइट? आपने BBA का एग्जाम भी लिखा होगा. कल भी शायद कोई एग्जामिनेशन है सर? BVP के पेपर्स चल रहे हैं. BVP भारतीय विद्यापीठ के पेपर्स हैं. तो बेसिकली एग्जाम का सीजन चल रहा है.
सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको पढ़ना भी है, चीजों को रिवाइज भी करना है। एंड यू नो सीजन इज नॉट ओवर ऑन 26th of June, जो हम IIM रोहतक की बात करेंगे, उसके बाद भी द गेम कंटिन्यूज। सेकंड इज IIM इंदौर, थर्ड इज JIP मैट, again third is symbiosis, and after that the long story of CUET continues. So the exam season continues, right? That the reason we'll try to keep our session as short and crispy as possible. ठीक है, so let's start with the session. So सबसे पहले before I go to my expert faculties, expert panelists, मैं थोड़ा सा एक brief fundamental about IIM रोहतक आप लोगों के साथ share करूंगा, all the attendees out here. Yeah, so let me share a presentation with you. So this is the PPT. And Praveen sir, please do let me know, is it visible to you? Yes, it is. आपको दिख रहा है sir? So very briefly, let me discuss and let me give an idea that what IIM रोहतक is all about. तो सबसे पहले आप देखिए, it is actually the strategy session which we are actually conducting today. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि IPM-IIM रोहतक का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, it comprises of 5 steps, right? 5 stages. पहली चीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यही रीजन है कि आप आज इस सेशन में बैठे हुए हैं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया होता तो शायद you might not would have been part of this session. So you are done with this first stage. Now second stage is IPM, right, aptitude test, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन जो है ये स्टेज 2 के लिए है, primarily for the stage 2, that how should you conduct yourself so far as the written test of IPM Rohtak is concerned. In other words, how you should conduct yourself on 26th of June 2022, right? So this is the stage 2 which we are going to discuss, और इसमें हम थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे, थोड़ा सा डीपर एस्पेक्ट में भी जाएंगे। स्टेज 3 है ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, which is highly possible in the second week of July, जब ये कॉल आ गया तो definitely we shall be conducting a special session on interview, and all those of you who will be getting a call for interview, आप लोग के लिए 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू भी होगी हम लोगों के साथ, right? So we shall be preparing you for the interview as well. But for now, for today, we shall not be discussing much about stage 3, because this is the stage you get across, or you come across only when you cross the stage 2. ठीक है? Stage 4 is announcement of result and list and offer acceptance. ये normally 3rd week of July में होगा, ठीक है? 3रे week of July में आपका ये होगा, once you are done with the online interview and you are selected for that. आप basically offer will be made to you in the 3rd week of July, and finally when you accept that offer, आपकी provisional admission हो जाएगी September 1st week में। August 1st week में आपका session शुरू हो जाएगा। I'm so sorry, it's August 1st week, right? So this is the stages of this examination: online registration, written test. Once you clear the test, it will be followed by online personal interview. Once you clear the interview, announcement and selection, and once you are selected, you pursue your course, or you start your course in IPM Rohtak, right? Now, these are the important dates I want to share with you. February में form out हुआ था, May 12 was the last day to fill the form, 26th of June, this is the day, right? जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Today is 23rd, 24th, 25th, 26th, Sunday, 2 दिन के बाद in fact I would say examination है। Announcement for आपने जो written examination clear कर लिया तो उसका जो result आएगा, that will be declared in the 1st week of July. 1st week of July के लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल्स आएंगे। आपका पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू will happen in 2nd week of July, right? And once you clear the interview, right, selection list will be made available for everybody in 3rd week of July, and session begins from August 2022. So these are the important dates. आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। This is the most fundamental thing, right? So yes, PI will be conducted when the aptitude exam is cleared. Yes, of course. क्योंकि मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 9,000 some student wrote the examination, तो उसमें से 900 something student got call for the interview. इसका मतलब ये है कि आप रिटन टेस्ट क्लियर करोगे तो ही इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। It is not possible for all the 9,000 students writing the entrance examination to get interview calls, right? So these are the important dates. If you want, you can take a snapshot. Now coming to the section 2022 के sections की मैं बात करूँ तो as of all of you know that number of questions, 3 sections are there. First is quantitative ability, जिसको maths भी कहते हैं, right?
और इसके बारे में हम एलाबोरेटली बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि मैथ्स में क्या ज्यादा आता है, क्या कब पूछा जाता है, कौन से सेक्शन का या कौन से चैप्टर्स का ज्यादा वेटेज होता है, क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे विद विधि मैम, who will be the mentor in mathematics in the quant section for today. So quantitative ability 40 questions, every question comprises of 4 marks, so 160 marks का ये section है, right? Obviously there is a negative marking, अगर आपने गलत आंसर दिया it will be -1. For logical reasoning 40 questions, every question carries 4 marks, 160 marks for logical reasoning. Verbal ability 40 questions, 4 marks each question, 160 marks, so total weightage is 480 marks. अब आपको 480 में से ही कुछ नंबर लेकर के आने हैं, आपका जो असेसमेंट होगा रिटन टेस्ट में that will be out of 480, right? Seats in Rohtak is 160. These are the number of seats in Rohtak. हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, यहाँ पे एक देखने वाली बात है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एबिलिटी 40 क्वेश्चंस एंड 40 मिनट्स, राइट? लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस एंड 40 मिनट्स, वर्बल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस एंड 40 मिनट्स. It appears that there is a sectional time limit. इस पर्टिकुलर स्लाइड को देख करके ये पता तो चलता है कि there is a sectional time limit, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, 2019 से जब ये IPMAT एग्जामिनेशन इन रोहतक का शुरू हुआ था, IIM रोहतक का एग्जामिनेशन IPMAT के लिए 2019 से शुरू हुआ था. Every year the notification says that number of questions are 40 in maths, 40 logical reasoning, 40 in verbal ability, and the time duration is 40 minutes per section. लेकिन जब आप रियली एग्जाम देने के लिए जाते थे तो उस समय एक चीज हमें पता चलती थी, इन द रियल पेपर, व्हेन यू राइट द रियल पेपर, दैट देयर वाज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, राइट? इन रियलिटी में देयर वाज नो सेक्शनल टाइम लिमिट. ऐसा नहीं होता था कि अगर आप इंग्लिश का पेपर 10 मिनट पहले करके बैठ चुके हैं तो आप वेट करेंगे 10 मिनट तक कि जब तक इंग्लिश का सेक्शन खत्म नहीं हो जाता या ब्लैकआउट नहीं हो जाता तब तक हम दूसरा सेक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे. ऐसी बात नहीं. सो बेसिकली देयर वाज नो सेक्शनल टाइम लिमिट. आप अगर इंग्लिश का पेपर आपने 20 मिनट में खत्म कर लिया तो सीधे मैथ्स के पेपर पे या फिर दूसरे सेक्शन पे जा सकते थे आप. सो इन नोटिफिकेशन 40 मिनट्स पर सेक्शन वाज रिटन, बट प्रैक्टिकली व्हेन यू गो फॉर द एग्जामिनेशन देयर वाज नो सेक्शनल टाइम लिमिट. बट फॉर 2022 आई कैन नॉट से दिस. मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. आई एम नॉट सेइंग दैट इस बार भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होगा. आज तक तो नहीं था सेक्शनल टाइम लिमिट, राइट? और क्योंकि सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं था, यही रीजन है कि देयर वाज नो सेक्शनल कट ऑफ इन IIM रोहतक. आई रिपीट माय सेंटेंस, सिंस देयर वाज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, दैट इज द रीजन देयर वाज नो सेक्शनल कट ऑफ इन IIM रोहतक. लेकिन 2022 के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन तो किया है कि 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, राइट? इन रियलिटी जब भी आप पिछले 3 साल से एग्जाम दे रहे थे देयर वाज नो सेक्शनल टाइम लिमिट. बट 2022 में जब आप एग्जाम देने जाएंगे प्लीज गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है दैट टाइम इज नॉट काउंटेड इन योर एक्चुअल एग्जाम टाइम. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा. इंस्ट्रक्शन में अगर लिखा होगा कि देयर इज अ सेक्शनल टाइम लिमिट तो आपको 40 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस मैथ्स के या लॉजिकल रीजनिंग के या वर्बल एबिलिटी के खत्म करने होंगे. अगर हमेशा की तरह प्रीवियस ईयर्स की तरह इफ देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट यू कैन टेक योर लिबर्टी, राइट? सो एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स, 160 मार्क्स, 480 मार्क्स में आपका असेसमेंट होगा. अब ये डिपेंड करता है कि 480 में आप कितना स्कोर करते हैं और उसके हिसाब से आपको सेकंड फेज यानी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, राइट? एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि देयर इज नो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इन IIM रोहतक. IIM इंदौर की तरह IIM इंदौर क्या करता है कि ऑनलाइन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है, बट IIM रोहतक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करता है. उसका रीजन ये भी है बिकॉज IIM रोहतक के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर नॉट वेरी कैलकुलेटिव इन नेचर. क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं जिसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े. तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा. नाउ सो कमिंग टू द वेटेज, सो एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर जो आप रिटन टेस्ट देने वाले हैं 26 ऑफ जून को, इट्स वेटेज विल बी 45%, राइट? इट्स वेटेज विल बी 45% आउट ऑफ द टोटल वेटेज, राइट? Interview will be having, so online personal interview होने वाला है which is stage 3, right? So once you clear the cutoff, once you clear the written test, right, जिसका 45% वेटेज है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा. इंटरव्यू का 15% वेटेज है, it has 15% weightage, and your past academics of class 10th and 12th will be counted. So 20% weightage given to your class 10th academics, 20% weightage given to your class 12th academics. इसका मतलब ये है कि unlike CUET, right,
these examinations like IIM Indore, IIM Rohtak, they are going to take into account your past academics. आपने 10th में कितने अच्छे से perform किया है, 12th में कितना perform किया है. These colleges like IIMs, IIM Indore and IIM Rohtak, they are going to take those things into account. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. And I do hope and I do believe that you would have performed well in the board exams as well. ताकि जब आपका ये जब सेकेंड वीक में एक्सपेक्टेड है कि आपके बोर्ड रिजल्ट्स आउट हो जाए, तो सेकेंड वीक में इतने अच्छे मार्क्स आपके आए होंगे ताकि आप बहुत ही प्राउडली कह सके कि भाई इस 40% जो वेटेज होगा 10th एंड 12th का, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे. राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. जल्दी से मैं आपको कट ऑफ बता दूं. सो लास्ट ईयर जब 2019 में आउट ऑफ 480 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी द कट ऑफ वाज 256 एंड दिस वाज द ओवरऑल कट ऑफ. क्योंकि सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता है IIM रोहतक में, सो देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ. So there is an overall cutoff. So you can see the list. For general it was 256 out of 480. Non-creamy layer OBC के लिए 195, SC 157, ST 141, EWS economically weaker section is 206 and 186 for PWD. 2020 में पैटर्न कुछ चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड, और एग्जामिनेशन जो था वो 480 मार्क्स से कम होकर के 240 मार्क्स का हो गया था, जिसमें कट ऑफ गया था 144. बट we are not going to discuss the 2020 part because examination 2022 में जो हो रहा है it will be of 480 marks only, right? ये 480 का होगा. Last year 2021 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि total number of people who filled the form was 10,743. इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, 10,743 लोगों ने, and out of which 9,187 people appeared in the examination, in IIM Rohtak examination. इसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे लोग जो फॉर्म फिल करते हैं वो शायद भूल जाते हैं एग्जाम देना, राइट? सो 9,187 people appeared in the examination, and out of 9,187 people, the number of people who were shortlisted for the interview were 908, and seats are 160. तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5:1 का रेशियो है अप्रोक्सीमेटली. हर एक सीट के लिए 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. So 9,137 students में से 908 students, right, were called for the interview, and last year the cutoff was 265. So 2019 में it was 256 out of 480. 2021 में it was 265 marks out of 480, right? So this was the cutoff. Now, अब जितने मेरे हमारे viewers हैं, उनसे उनके फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की. अब इस ईयर का कट ऑफ क्या जा सकता है एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, आपको अगले 2 दिन में क्या चीजें फॉलो करनी है, हाउ शुड यू कंडक्ट योरसेल्फ ऑन 26th of June. इसके लिए लेट मी गेट इनटू द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेशन एंड लेट मी इनवाइट माय esteemed panelists and esteemed colleagues who are the expert faculties in mathematics, that is QA, logical reasoning, and verbal ability, that is English, right? So first of all, let's take the QA part, मैथमेटिक्स पार्ट, और मैथ्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और मैथ्स के लिए मैं इनवाइट करूंगा विधि मैम को. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम एंड स्वागत है आपका. जितने हमारे व्यूअर्स हैं मैम, उनके लिए प्लीज हमें ये बताइए कि ये जो 40 क्वेश्चंस QA के आएंगे एंड विच कंप्राइजेस ऑफ 160 मार्क्स, राइट, हाउ शुड दे गो अबाउट इट? सो प्लीज एक्सप्लेन मैम. All yours. I'm just stop sharing the screen. Yeah, please, it's all yours. Thank you, sir. First of all, good evening, everyone. A very good evening to all of you. So let us discuss something about quantitative aptitude section. But before starting with the quant section, there was one question from one student said, paper easy hoga. So I think in mathematics, I can give the answer कि paper easy hoga is directly proportional to the practice that you must have done. So practice is something, अगर आपने easy practice करी है, मतलब easy practice in the sense that loose practice करी है, तो paper will be difficult for you. If you have done okayish practice, the paper will be medium for you. But if you have done the hardcore practice, so when I talk about hardcore practice means all the classes, all the handouts, types of the questions, the mock papers, everything, then obviously the paper will be easy for you. So to say a paper is easy, so that means madam, it is inversely related. Directly हो जाएगा sir. हाँ, yes, it will be, yes, of course. It is actually inversely related. Inversely related to the practice that you must have done. Okay. So it's easy practice will be your difficult paper. So it will be inversely related in that sense. Now, when we talk about the quant section, the first question that arises over here is what are the topics that will come in quantitative aptitude section? So let us just throw some light over the
topics that will be there in your quantitative aptitude section. The topics will be from both basic as well as higher mathematics. So the common question that students they ask from me is कि मैम हायर मैथमेटिक्स के कौन से क्वेश्चंस आते हैं या कौन से टॉपिक्स होते हैं. एज इन IIM रोहतक 90% आपका बेसिक मैथ्स रहता है. So higher mathematics के अंदर these are the three topics which you can see over here in the screen. These are the three topics which generally they ask questions from. One is PNC, one is inequalities, and the other one is maxima and minima. These are the three major topics of higher mathematics which they generally ask you in IIM Rohtak paper. But apart from these topics, all the topics will be from basic mathematics. Right? So basic mathematics में कौन से topics आते हैं जो हमने पूरा basic पढ़ा है, which talks about number system, time and work, time, speed, distance, percentages, ratios. As you can see on the screen, all the topics. और इन सब में से questions आते हैं. As we have like 40 questions in hand, so किसी chapter में से you will be getting 2 questions और किसी में से 3 questions, किसी में से 1 question. So 40 अगर मैं 40 questions बोलती हूँ on average 2 questions per topic भी बोलती हूँ तो there will be 20 topics that you will have to excel in order to clear the section, as in order to clear the exam. But obviously we are going to talk about that what is the good attempt of the questions in the quad section, that is later on. But on an average there are 20 major topics that you'll have to study. So we'll cut it short. When we talk about like previous papers, थोड़ा सा अगर हम previous papers की बात करते हैं तो कौन से ऐसे topics हैं जो बहुत ज़्यादा limelight में रहे हैं from the past 3 years. So in the last year 2021, when we talk about the topics which were like highlighted, completely highlighted, that is probability and permutation combination. There were about 7 to 8 questions which are from these two topics. 7 to 8 questions out of 40 which are from your probability as well as from your permutation and combination. So these are like things. इसके अलावा अगर if I talk about basic mathematics, थोड़ा सा basic maths के बारे में बात करते हैं तो topics which were in limelight was linear and quadratic equations. Along with that, we have simple and compound interest. Simple and compound interest. These were the topics which were again in limelight. But अगर हम overall 3 years की बात करते हैं, तो I will be sharing you the number of questions that generally came from these topics. For example, in number system, they directly ask you about the cyclicity. Now, what is the unit digit of a particular number? These were the direct questions that they have asked. These were the direct questions. Then we have time and work, wherein we have the questions related to concept of man days. वैसे भी CAT levels जब हम बात करते हैं, CAT बात करते हैं, they were very keen about man days concept in their paper. So if we talk about Indore paper or we talk about Rohtak paper or we talk about any of the CAT papers, in that they always talk about man days concept. So this is very, very important concept from your IIM Rohtak point of view. Then percentages, ratios, mixtures, simple and compound interest, they have like installment based questions. अगर थोड़ा सा paper difficulty level पे जाता है, so the type of questions that they ask is your installment based questions on simple and compound. Otherwise, it will be the general questions of simple and compound interest. Moreover, in linear and quadratic, if you talk about that thing, there will be more questions based on sum of the roots and the product of the roots. So you should very well aware about the formulas of sum of the roots and product of the roots and practice this really well. Then apart from this, the other topics that they're going to ask you is from averages, from probability, obviously. So probability, when I talk about probability, it's not 11th or the 12th probability they're going to ask you. That is 10th level probability that they're going to ask you. So you should work on independent events, mutually exclusive events, and conditional probability for that matter. There was no base theorem, and as of now, जो generally question पूछा जाता है कि base theorem आएगा मैम, Bernoulli's आएगा मैम. So that is not there in probability. What IIM Rohtak ask in probability is the basics of probability, which is 10th level probability, not your 11th and 12th, but they club that probability with your permutation combination, the basics of perm and com, and they present you the question based on that. There was one question based on clocks, which was a strikes question. जो पिछले 2-3 साल का pattern इनका चल रहा है. Questions जो clocks में से आता है is not about find out a date, or they're not going to ask you कि आज ये है तो 7 दिन बाद क्या होगा. What they're going to ask you, मतलब in calendars and clocks both. So in clocks, what they ask you is कि घड़ी strike कितने पे करती है, 6 times करती है, 12 times करती है, तो इतने बजे कितना strike करेगी. So these are the types of questions that comes in clocks.
And then the regular questions come. You will see logarithm, one question on logarithm for sure. Logarithm question will be there. So you'll have to practice all the properties of logarithm very well before going to the exam. Jitni bhi 9 or 10 properties logarithm ke, please prepare them, as we are going to have 1 or 2 questions based on logarithms. That is for sure 100% that we're going to get it. From higher mathematics, not much. As I've said, that 90 to 95%, 92, 93% of the questions will be basic mathematics. So there will be few questions, let's say 5-7 questions that I'm going to talk about, which will be from your higher mathematics. So PERM, inequalities, direct inequalities. They were easy, basic, direct inequalities that are being asked in the paper in the previous 2-3 years. And then there was one question, maxima and minima, which we have seen in the actual paper. But let me tell you one thing. आपने जो प्रैक्टिस करा है आपको वही सब पेपर में दिखेगा. So it is not like that कि बहुत difficult पेपर है या बहुत easy है या बहुत medium पेपर है. But if you have practiced well, so you whatever you have practiced, you will actually see in the paper. Unlike other papers या कुछ papers हमारे ऐसे होते हैं जहाँ हम practice कर रहे हैं, हमें कुछ और type questions मिल रहा है. Even the figures are different. But here you will see the same figures, same questions, and everything will be same. Perhaps you have practiced it very well from the complete source that we have given it to you. So these are the topics, the major topics that you'll have to work on before giving. So that's a good news, ma'am. Good news, because higher maths के अगर 6 से 7 questions last year थे भी थे, तो those questions were very basic in nature. Level of difficulty was pretty manageable, doable. Correct, ma'am? Okay, yes, great. Absolutely, sir. So, ma'am, I would like to know from you that ये 40 minutes का टाइम अगर मान लीजिए हम मान करके चलते हैं कि इस बार सेक्शनल टाइम लिमिट होगा, जो कि हर साल नहीं होता था, इस बार भी आई अज्यूम दैट वो ना हो, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को प्रिकॉशनरी मेजर बता दिया है कि प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन. सो मैं मान के चलता हूँ कि 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हैं. सो आपके हिसाब से मैम क्या लगता है कि कितने क्वेश्चंस बच्चों को अटेम्प्ट करने चाहिए? Sir, according to the paper and according to IIM ROHTAK, looking at the pattern also, out of 40 questions, 32, to be very precise, 32 will be something which is a good attempt. It will be a very good attempt and it's a manageable attempt. अगर कोई बेसिक मैथ्स का बच्चा मुझे बोलता है कि मैम मेरे को हायर मैथ नहीं आता, तो भी मैं बोल रही हूँ आउट ऑफ 40 अगर आप वो हायर मैथ का क्वेश्चन भी छोड़ते हैं, तो 32 is something which is very, very, very much manageable for IIM ROHTAK. So 32 questions, I would say roughly around कि 40 में से 32 you can attempt easily, very easily. And ma'am, what is the scope for the students go wrong during attempts? So I would say a good attempt will be 32 questions with an accuracy of somewhere around 87 to 88%. That would be something which I will be saying, because अगर हम लोग on an average अगर बात करें तो मैं 100 marks सोच रही हूँ फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कि अगर आप थोड़ा सा वर्बल में गूफ अप करते हैं या आप लॉजिकल में गूफ अप करते हैं, सो मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जो आपको उसके अंदर सेवियर होना चाहिए, बचाना चाहिए. सो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मैथ्स के लिए लेकर चलते हैं. सो 32 में से अगर लेट्स से अगर मैं 87 88 का परसेंटेज देखती हूँ, 28 क्वेश्चंस, रफली अराउंड 28 क्वेश्चंस इफ आई से कि आपका करेक्ट होना चाहिए, तो विच goes for 112 marks and 4 for your negative marking. So around 108 marks is something which I am saying कि एक अच्छा attempt माना जाएगा और possible manageable attempt है जो हो सकता है IIM रोहतक के पेपर में. So means out of 160 marks, ma'am, 100 plus is a good score. Absolutely, a manageable score. Absolutely, if you have practiced well, then this is a manageable score for IIM रोहतक. Okay, great, ma'am. Thank you so much. So guys, एक सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए कि क्वेश्चंस जो होंगे वो पिछले अगर 4 साल का हम ट्रेंड देखें, 3 साल का ट्रेंड देखें, तो क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक इन नेचर. क्वेश्चंस फंडामेंटल होते हैं. हायर मैथ्स के जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर 7 थे, सरप्राइजिंगली 7 क्वेश्चंस थे, बट उसके पहले हायर मैथ्स के 3 या 4 से क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते थे. बट स्टिल इवन इफ द हायर मैथ्स इज देयर, इट्स वेरी मच डूएबल. जैसे मैम ने बताया, क्लास 10th लेवल का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी था, एंड दैट वाज वेरी इजी इन नेचर. ओनली थिंग यू नीड टू डू इज मैनेज टाइम, एज मैम सेज. और 40 मिनट्स में अगर आप 32 अटेम्प्ट करते हो with a scope of getting 4 or 4 answers wrong, then also if you are above 100, out of 160, it's a very good score. तो 100 से ऊपर, 100 से ऊपर आप ये टारगेट रख के चलिए कि किसी भी हालत में आपके 100 से स्कोर ऊपर आने चाहिए. And for that, at least, if I may mention, at least attempt more than 30 questions. Right, ma'am? Yes, sir. Absolutely. Great. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for your insight. Now the second part is verbal ability, and Praveen sir, I would request you to please take us through this. Absolutely.
Okay. So सुमन जायसवाल का यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, मैं जल्दी से रिप्लाई कर दूं. सुमन, there is no short answer questions. All the 120 questions, 40, 40 and 40 in maths, 40 in English, 40 in LR will be MCQs. No short answer like I'm in Indore. ठीक है? Yes sir. Please go ahead. Okay. Share the screen again. Okay, great. So I hope you can see me and you can see the screen as well. So let me start the small pointer here. Boys and girls, I will not be taking much time here. घड़ी के 6 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है. सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ों को हमें इधर ध्यान रखना पड़ेगा with respect to the verbal section, and few things that you're supposed to take care for is that anything that you would have prepared is what you're going to get. You're not going to get any surprises, right? ये बात पक्की है कि कोई भी नया टॉपिक आपके पास नहीं होगा. You would not have new topic. Number one. Number two, when we talk about questions may be in a molded sense. So that means you would not have a new question, but the same question may come in a different package. So be prepared for that. IIMs की फितरत होती है अपने रंग बदलने की. ये विनीत सर से अच्छा कोई और नहीं जान सकता, और इसको विनीत सर वाउच करेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग कैट को ट्रैक करते आ रहे हैं, और हमने देखा है कि जब भी आईएम होता है कैट अपना रंग बदलता है. उसी के आधार पर जब आईएम की बात आती है, IIM which they are talking about their IPM paper, they would also bring in some kind of a googly. क्या googly होती है वो हमें भी नहीं पता. Vinitha, I hope you would vouch for that. Yes sir, 100% sir, 100%. Right? So ये जरूरी नहीं है कि कोई आपके पास क्वेश्चन अलग होगा, बट दैट इज फॉर श्योर इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई चीज ऐसी गूगली मारेंगे जो आपके शायद समझ में ना आए, जिनको आपको समझने के लिए टाइम लगेगा. मैं ये नहीं कहूंगा समझ में ना आए, बट आई विल से इट माइट टेक लिटिल टाइम. नाउ लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट क्या क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा. एक चीज ध्यान रखना, देयर विल बी 15% ऑफ द क्वेश्चंस, द वन दैट वुड बी टर्म्ड एज इजी, राइट. लेट मी कॉल दिस एज इजी. Then there would be another 15% of the questions that will be moderate plus, right? So I'll call it as a moderate plus, right? Then there will be 70% of the questions here, the one that you would be in a position to solve it with little time, right? Sir, easy की definition क्या होती है? Easy की definition वो होती है जो मेरा समय बचा के आंसर निकाल सके. Moderate की definition क्या होती है? Moderate की definition वो होती है the question which is going to take either 1 minute or a maximum of 90 seconds, but I'll get most of the answers right. What is the definition of a moderate plus? A moderate plus is a time waster. These are the kind of questions that would sound easy, but they are going to catch you up. Now this is what known as a moderate plus questions. पूरे पेपर के अंदर आपको, चाहे वो वर्बल का सेक्शन हो, इंडिविजुअल की बात करें या सबकी बात करें, आपको 15% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको आसान लगेंगे, टेम्पटिंग लगेंगे. आपको लगेगा मैं अटेम्प्ट करता हूं, वो अटेम्प्ट नहीं होगा, वो बेट होगा. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा. While the remaining questions would be easy or the moderate variety. I'm sure this is again okay with it. So 15 for around 6 questions here, around 6 questions here, correct? And 1228, right? So this is what the ranging here. I'm sure you would have got. Let me go ahead from here. What I'm talking about here is another pointer now. Now the question comes in, sir, किस type के question should I be expecting in IIM रोहतक? Boys and girls, हम अभी सिर्फ अपनी conversation को IIM रोहतक IPM course के लिए restrict कर रहे हैं. We are not going for BVP because there are many students who are asking for BVP. ये वो कुछ और नहीं होगा. IIM इंदौर भी नहीं है, ये सिर्फ IIM रोहतक है. IIM इंदौर में क्या होगा? We'll have a separate session and we'll be discussing about that. All the questions would be multiple choice questions. You would not have questions which would be something like theta type questions that generally appears in your Indore questions, right? But having said this, मैं आपसे फिर भी कहूंगा, हमने उसके लिए भी प्रिपेयर किया है, तो रेडी रहिएगा. आते नहीं है IIM इंदौर के अंदर थीटा टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं in verbal, but if they may copy, they may do that, right? Nobody can stop them from doing it. Again, if you would have theta type questions, there will not be any negative marking to that. So parajumbles without options अगर आते हैं तो आपको attempt करने होंगे. ये question 2 से ज्यादा नहीं होंगे. You would have only 2 questions अगर आते हैं तो. Let's prepare for the worst, right? That we do have a theta type question, right?
So even if you do have type in your answers types, so in that condition, you'll have 2 questions and there'll be no negative marking to that. So that means these questions will not have negative marking. आप try कर सकते हैं, अपना combination बना सकते हैं, then you can deliver that as well. So that is again possible, but generally you do not get that. Coming back to the reference here, let's assume जैसे विनीत सर ने आपको कहा कि अभी तक वैसे सेक्शनल आता नहीं है, हर बार ये बोलते हैं 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट, और मान लीजिए इस बार अगर सेक्शनल देते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर सेक्शनल नहीं दिया, यू हैव द राइट, टॉगल करो, यहाँ से वहां से जंप करो, यहाँ से सेविंग करो, अगले वाले सेक्शन पे जाओ, वर्बल से टाइम सेव करो, अपना क्वांट्स के हायर मैथमेटिक्स कीजिए, लॉजिकल रीजनिंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड टॉपिक, वहां से आप उठा के अपना टाइम फिर से आप क्वांट्स की तरफ ले जा सकते हैं. That's a different ball game. Now the question comes in कि सर मेरे पास अगर 40 minutes ही हैं and I cannot switch between the sections, then what should I be doing? Then the rationality would be, आपको एक पूरी चीज समझनी होगी, जो कि अभी हम डिस्कशन करेंगे एंड विनीत सर आपको इसका कैलकुलेशन बताएंगे कि कितना परसेंट मार्क्स आपको चाहिए होता है इन टोटल, करेक्ट, विच वी वुड बी डूइंग दैट टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि वहां से आपको बैक ट्रैक करके अब चीज को समझना पड़ेगा, करेक्ट. Now what you need to understand here is कितना परसेंट चाहिए वो मैं आपको बाद में बताता हूं. पहले मैं आपको बता दूं टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे, कौन से डिफिकल्ट टॉपिक्स हो सकते हैं. एंड वन ऑफ देम वुड बी द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन is something which they love to the core. So reading comprehension के अंदर, say for example, if there are 2 passages, let me assume there are 8 questions, right? Let me assume there are 8 to 10 questions. Out of these 8 to 10 questions, there would be few questions which are like 5 questions which you can solve extremely easy, right? You would be in a position to solve that, while the remaining 5 questions would require extensive reading. While the remaining 5 questions would require extensive reading. Now, extensive reading would refer to what they are actually demanding for. I'll have to go and read for it. हमेशा मैंने आपको बताया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जब भी बात आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कभी भी दिल पे नहीं लेना चाहिए. हमारी प्रॉब्लम ये है, बाकी किसी चीज को हम दिल पे नहीं लेते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दिल पे लेते हैं. मैं बताता हूँ क्यों लेते हैं आप लोग. आप इसलिए लेते हैं क्योंकि आपने एक पैसेज में 8 मिनट्स ऑलरेडी स्पेंड कर दिए, उसमें थे 5 क्वेश्चन, उसमें से हुए आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन है. अब आप कहते हैं यार ये तो बहुत ही बैड बार्गेन है, 8 मिनट लगा के मैंने 2 क्वेश्चन किए, मैं तो 2 और करूंगा ही. इसको बोलते हैं रिवेंज क्वेश्चंस, राइट? तो जहां ये आप रिवेंज मोड पे आते हैं ना, देखो यार, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिवेंज को बढ़ावा देता है, ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवेंज को बताता है, और इतिहास गवाह है जब जब जिसने रिवेंज लिया है तब तब वो व्यक्ति या वो देश डूबा है, करेक्ट. सो डोंट गेट इनटू दिस रिवेंज रेफरेंस ऑफ दिस कि मैं 2 क्वेश्चन और करूंगा, 8 मिनट में 2 क्वेश्चन की बात नहीं. प्लीज डोंट डू दैट. IIM के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, करेक्ट. अगर आपके 2 क्वेश्चन सही हैं, देयर कुड बी वन मोर क्वेश्चन विद अ 50-60% एक्यूरेसी लेवल, यू मे स्टिल अटेम्प्ट दैट. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल 5 क्वेश्चंस, आई कैन बेट एंड वाउच फॉर इट, वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव आने वाला है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैंडल दिस प्रॉपर्ली. Sir, what are the kind of topics that I'll be getting? You'll be getting abstruse topic. You may get philosophy, you may get science, you may get economics, you may get polity, you may get something on micro or macroeconomics that might talk about IoTs. It can talk about anything. So be prepared for that. जैसे कि अभी हमने किए हैं, बहुत सारे IIM के सेशंस किए हैं, हमने क्लास शीट्स में किया, सभी चीजों. Go ahead from there. Can you see something here when I'm referring to grammar? Can you see something which is specific? आपको हमेशा बोला है ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और नाउन प्रोनाउन और ए प्रेपोजिशन, ये सबसे बड़ी एरर्स होती हैं, राइट? These are the kind of errors that you'll be getting. And mind it, these sentences will not be the small sentences. इनके sentences बड़े होते हैं, करेक्ट. बड़े होने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कह रहा हूं तो सब्जेक्ट यहाँ होगा और पूरी कहानी घुमा के लाएगा आपको, ला 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 पूरा मोहल्ला घूम के आएंगे और बाद में आपको वर्ब मिलेगा. I hope you're understanding my point. This is the kind of a problem with these kind of questions, as you might be getting in the GMAT questions as well. आप पूरी जगह घूम के आएंगे, वर्ब आपको बहुत बाद में मिलेगा, तब तक आप थक जाते हैं. बीच में आएंगे 4 वर्ब और आपको लगेगा इनमें से कोई एक ले लो यार, मैं थक गया पढ़ते पढ़ते. ऐसा नहीं करना. This is what a mistake that you people would be doing. So please make sure that you avoid this and go with the complete reading of a reference. पूरी चीज पढ़नी होगी.
IIM का चाहे वो रोहतक का पेपर हो चाहे इंदौर का पेपर हो, जिपमेट का कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम बाद में बात करेंगे। इन दोनों पेपर की खासियत ये है कि इन्हें पढ़ना पड़ता है। आसान है, पढ़ना पड़ेगा। आसान है क्योंकि हमने किया है, मगर पढ़ना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू गो विद। Now, moving to the third portion, which is all about the vocabulary. ये रहा vocabulary, ये रहा आपका grammar, ये रहा आपका reading comprehension inference variety, and let me go with the last variety, which is about syllogism, logical consistency and deductive reasoning. इसमें 4 portion होते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा जो पोर्शन आएगा वो आएगा vocabulary. The biggest portion that I'll call, or the maximum portion that you'll get, is a vocabulary. The second portion, or second abstruse portion that you would be getting, would be all about the questions which are on reading comprehension. Then the third largest that you would be getting there would refer to as a logical reasoning variety question. Logical reasoning मतलब logical consistency हो गए, assumption questions हो गए, inference हो गया, parajumbles हो गए, para completions हो गए, you would have summary based questions. This is what I love at. And last would be the grammar variety. That means या तो minimum number of questions होंगे या फिर मिनिमम एब्स्ट्रूजनेस के साथ होंगे, राइट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इन चारों में से सबसे कम होती है। अब वो मिक्स करें अलग बात होती है। हम अभी आपके सामने डेटा जो ला रहे हैं वो पिछले जो जितने भी सालों से पेपर आ रहा है उनकी एक एक्यूमुलेशन को लेके आ रहे हैं। अब चीज ड्रास्टिकली बदले, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वो एक अलग बात है, बट दिस इज हाउ दैट यू आर सपोज्ड टू गो विद। दैट मींस इसके लिए आपके पास वोकैबुलरी अच्छा होना है, नंबर 1। Second, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड इज अ रीजनिंग वैरायटी, एंड द फोर्थ वुड बी द ग्रामर। So these are the 4 elements that you are supposed to go with. Now, I am sure this point is okay with everybody. Please type in CC in chat window so that I should understand, and let me proceed to the next pointer. CC refers to as the crystal clear कि सर ये बात समझ में आ गई कि कहाँ पे हमें ज्यादा inclination देना है। Vocabulary, again, when I'm saying it is not just the synonym antonym, they can be inference based questions on vocabulary. That can also be the word usage of vocabulary. That can also be the questions which might have a different formations of vocabulary. Be prepared for any kind of formations, though we have done umpteen number of varieties there, so do not worry about that. Moving away. Thank you for providing me the crystal clear reference. Now let me go ahead and let me share one last pointer here before I move to something else. The one pointer that I would share here is a simple thing. Sir, इसमें से मैं कितने questions attempt करूं? So out of 40 questions, देखो जब हम IIM का पेपर दे रहे होते हैं एक चीज तो पक्की होती है, it's always a race against time. And the second thing is, it's a race against time. And the second thing is, eliminate the questions which I don't want to do. Primarily, IIMs is a game of elimination. IIMs is a game of elimination. अगर आपने ये 15% क्वेश्चन पहले उठा लिए, तब आपके, मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं प्रोफेसी कर सकता हूं, तब आपके ये जो इजी वाले हैं ना, इनमें भी डर लगता है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। वो ये 15% भी गया और इस 70% में से भी क्या गया। अगेन, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, द ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग इज स्कैनिंग द पेपर is important with IIM, right? और ये हम हर समय करते हैं। So out of 40 questions, what I would recommend here is a 30 or a 31 questions with again 80, 85 और 90 बहुत ज्यादा हो जाता है। 80% एक्यूरेसी अगर आप लाते हैं तो ये एक स्टार्टिंग पोर्शन में इसको बोलूंगा, इसको ये नहीं बोला या मैं इसे एवरेज बोलूंगा। दिस इज नॉट ऑन अ हायर साइड, दिस इज नॉट ऑन अ लोअर साइड, बट मैं कहूंगा एवरेज इसमें करते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स डू। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 31 क्वेश्चंस आर टू बी डन विद somewhere between 80-85% accuracy. अगर आप ऐसा करते हैं then it's a good score with respect to this section. क्योंकि LR की बात जब सर अभी आएंगे आपको वो बताएंगे सर how LR should be handled there, because सारा दारोमदार फिर उस LR की तरफ जाता है. So this is what a 31 questions out of 40 is what that I would expect this time. Vineet sir. Sir, thank you so much for your insight, sir. इससे 3 चीजें निकल के सामने आ रही हैं जो आपने बताया, and please correct me sir if I am wrong. पहली चीज तो ये है कि वोकैबुलरी का सबसे ज्यादा वेटेज होगा, वोकैबुलरी इज द गेम चेंजर इन दिस, एंड वोकैबुलरी इन एवरी पॉसिबल फॉर्म, नॉट जस्ट एंटोनिम, सिनोनिम एंड सो ऑन, बट अदर फॉर्म्स एज वेल। दूसरी चीज जो आपने बताया कि आरसी और ग्रामर, ये 2 चीजों को अटेम्प्ट करने के लिए डोंट बी इन हेस्ट, डोंट बी रेस्टलेस, हैव लॉट ऑफ पेशेंस। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है ये जानना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी जानना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन से बचना है।
Absolutely sir, राइट, time wasters. सो जो आपने 15% क्वेश्चन जो बोला जो मॉडरेट प्लस का है, एंड दिस दैट विल बी कंज्यूमिंग टाइम, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन को 5 मिनट का समय देके बना भी दिया सर, तो 5 मिनट में आएंगे 4 ही नंबर, Absolutely. लेकिन उस 5 मिनट में अगर 3 इजी क्वेश्चंस बना दिए तो आ जाएंगे 12 मार्क्स. Absolutely. So basically you have to play smart in this particular section so far as the VA is concerned. Correct, sir? Correct, sir. Absolutely. Absolute deduction, sir. So thank you so much, sir. So guys, this was the message to you. पेशेंस रखिएगा, परसिवरेंस रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन से क्वेश्चन से बचना है ये जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए Praveen sir, I'm sure lot of practice is needed. Lot. Absolutely. And most of the students have actually done the practice, sir. And we have been doing now also late night classes, early morning classes. I mean, अब तो ऐसे लगता है कि सुबह उठो और सिस्टम के साथ आ जाओ, स्टूडेंट्स के साथ बैठो, and let's do it. So we have done it. I mean, sir. I'm sure, and the students are writing so many mocks and they are studying day and night. Right. Absolutely. So sure that they are well prepared for that, right? So thank you so much, sir. Thank you so much for your insight. Thanks, sir. I would now request and invite Girish sir. Girish sir, जो सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे cute सा section है, that is LR section. Please take us through that, right? Hi everyone. So, अभी बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, राइट? As everyone said, this is the part जिसमें आप ना सबसे बेटर कर सकते हो, राइट? बेटर कैसे कर सकते हो? सी, पहले तो मैं डिफिकल्टी बताने वाला, लॉजिकल रीजनिंग की डिफिकल्टी क्या होगी, देन विल टॉक अबाउट कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, राइट? ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने. सो जनरली जो हमारे पेपर का डिवीजन होता है इन रोहतक, out of 40 questions you will find 20% questions easy. ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको पेन पेपर यूज नहीं करना होगा. कौन से क्वेश्चन होंगे? लाइक मिरर इमेज, राइट? डूएबल. लाइक कोडिंग, सिंपल, दे आर बेस्ड ऑन सिंपल पैटर्न कोडिंग और सिंपल मिरर कोडिंग और सिंपल जम्बलिंग बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? एंड और कौन सा क्वेश्चन होगा? डाइस बेस्ड क्वेश्चन. डाइस एज यू ऑल नो कितना इजी होता है. तो ये 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए आपको पेन पेपर यूज नहीं करना होगा, वो आप बहुत कंफर्टेबली सॉल्व कर लेंगे, राइट? देन वी हैव remaining 60% questions moderate. And what we need for moderate questions? Now ये कैसे होंगे? See, moderate questions के लिए ना, अगर आपने प्रथम के सारे हैंडआउट्स किए हुए, प्लस सारी क्लासेस करी, प्लस नॉलेज प्राइमर किया एंड मॉक्स, अगर इतना आपने किया है तो ये 60% आपके लिए डुएबल है. दैट इज, इस 60% के लिए इतना इनफ है, राइट? ये 20% तो आप कर लेने वाले, राइट? इवन बहुत कम प्रैक्टिस के साथ भी. बट ये मॉडरेट 60% के लिए यू नीड हैंड आउट, क्लासेस, क्लास नोट्स, नॉलेज प्राइमर एंड योर मॉक्स, राइट? देन 20%, ये 20% आपका पार्ट होने वाला है डिफिकल्ट वाला, राइट? एंड ये कैसे होगा, इसको कैसे करना, दिस इज द फाइट, राइट? वैसे अगर आप ये 80% भी कर लेते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? 32 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट कर लेते हैं एग्जाम में, क्यूए एलआर वाले पार्ट में, सो आई गेस कि आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला है. अगर आप क्यूए एंड वीए को एवरेज भी कर लेते हैं तो, राइट? 32 क्वेश्चन मींस, राइट? ओके, सो ये वाला पार्ट कैसे होगा? इसके लिए अगर आपने हमारी स्पेशल क्लासेस देखी, राइट? IIM GMAT के स्पेशल क्लासेस, प्लस साथ में आपने टॉपिक टेस्ट प्रिपेयर किए for LAR and LCR also, right? So इनकी हेल्प से आप ये वाला पार्ट भी बूस्ट कर सकते हैं. खुद कितनी प्रैक्टिस की है, राइट? सेल्फ स्टडी जो की है, उससे ये डिफिकल्ट वाला पार्ट सॉल्व होने वाला है. मींस अगर आपने इतना करा है तो आई गेस कि आपको जो 40 क्वेश्चंस क्यूए में LR वाले पार्ट में मिलने वाले, उसमें से 36 क्वेश्चन डुएबल होते हैं. अगर मींस पेपर के बाद आपको कोई दे दे, वो प्रेशर खत्म हो जाए आपके ऊपर, आपको लगेगा ये 36 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये मैं कर सकता था, राइट? सो व्हाट वी नीड इज प्रैक्टिस. 20% क्वेश्चंस इजी होने वाले, 60% मॉडरेट डिफिकल्टी के, एंड 20% थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट होंगे जिनके लिए यू नीड मोर प्रैक्टिस, राइट? अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? रिवीजन करना है, राइट? सो अभी मैं बात करता हूँ टॉपिक्स की, किन टॉपिक्स को रिवाइज करना है. लास्ट 3 ईयर के डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे, राइट? लास्ट 3 ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल डिसाइड कि किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? सो आई हैव डेटा ऑफ लास्ट 3 years, 19,
20 and 21, right? As you all know, 2020 में 20 marks थे, 60 marks का paper था, right? 20 questions from LR, and 19 and 21 में 40 questions. So this is the pattern, right? जहां से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले. तो अब वन बाय वन हम हर एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं. किस टॉपिक से यू कैन एक्सपेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन. सो इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन जनरली 19, 20 एंड 21 में आए? सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट टाइप, pointing to a photograph type. As you all know, this is very easy question, right? Second, you'll find simple puzzle, right? Like there are 6 members in a family, 2 married couples, and A is father of B, someone is son of. The data is given, right? That is again very easy question. On the basis of that data, one line or 2 line, they will give you one simple question, right? So you'll find 2 to 3 questions from this topic. As you see, 2021 with 3 questions were there, 2 and 1. So this is one important topic, and you'll find only easy question from this topic. So family tree से generally आपको कोई difficult question नहीं मिलने वाला. So this is one topic जिसको आपने बहुत अच्छे से revise करना है, right? Family tree. Second, direction sense. As you can see, 2 questions in 2021, 1 in 2020, and 2019 1 question. So this is again very important topic. So direction से कैसा question you can expect? Simple question like based on Pythagoras theorem, or based on some reference point in which direction I'm facing now with respect to my initial position or with respect to some other position. So you can expect simple questions from this topic, easy questions from this topic also, right? So doable question from directions also. Inequalities, as you all know, inequalities से difficult question possibly नहीं. If you know the concept of inequalities, even हम इसकी classes भी की थी, YouTube live भी किया, 2 session किए. अगर अभी भी आपको inequalities में कुछ भी problem है, you do watch those YouTube lives, right? So inequality, आप देख रहे हो इसकी importance कितनी, 3 questions and 3 questions. So you can expect 2 to 3 questions this year also from this topic, right? Minimum 2 to 3 questions, and वो सारे question doable होने वाले हैं, right? अभी तक फर्स्ट 3 टॉपिक, फैमिली ट्री, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसको आपने एग्जाम में छोड़ना चाहिए, राइट? तीनों टॉपिक से सारे क्वेश्चन डुएबल होने वाले, इजी होने वाले, इवन नॉट इवन मॉडरेट, राइट? ये भी इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं, करेक्ट? आई होप दिस इज क्लियर. पिक्चर वाला क्वेश्चन, ओके, एंड में देखना चाहिए. यस, विल डिस्कस अबाउट. अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिस्कस इनमें प्रॉब्लम है तो ड्यूरिंग क्लास वी कैन डिस्कस दैट पर्टिकुलर टॉपिक. एनालॉजी में आपको पता है, लेट्स से फर्नीचर इज रिलेटेड टू समथिंग, लाइक फर्नीचर इज रिलेटेड टू टेबल, देन पेन इज रिलेटेड टू व्हाट, इन द सेम मैनर. आपको सिंपल लॉजिकल रीजनिंग वाली एनालॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे. you'll find 1 or 2 questions hardly from this particular topic, and वो easy होगा, doable होगा, right? Clock and calendar. So this is one topic. आप देख रहे हो 2021 4 questions, 1 question, 2 questions. So again, these 2 are very important topic. And clock से, see, आपके मैथ्स में जो क्वेश्चन आएगा क्लॉक का वो अलग होगा. यहाँ पर भी you can expect question of clock in logical reasoning. अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे, हर पेपर में आपको कैलेंडर एंड क्लॉक से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. In case you have any doubt in these 2 topics, calendar and clock, so again, do watch our YouTube videos, right? Playlist mein there are, I guess, 4 videos of clock and calendar, and that is sufficient for your logical reasoning part. ठीक है, अगर वो आपने कर लिया तो you can answer those questions जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, right? Clock and calendar. So this is again important topic. आपको दिख रहा है, and ये क्वेश्चन भी doable होने वाले. हो सकता है इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन होगा अगर आपने कैलेंडर एंड क्लॉक को डीपली नहीं स्टडी किया है. अगर आप वो यूट्यूब वीडियोस देख लोगे ना, उसके बाद आपके एग्जाम में जो भी कैलेंडर या क्लॉक का वीडियो आने वाला है वो आपके लिए डुएबल होगा. मींस ऐसा कोई क्वेश्चन और पॉसिबल नहीं है जो जनरली कैलेंडर या क्लॉक से रीजनिंग वाले पार्ट में पूछा जाता है, राइट? बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता. ओके, नाउ वन पार्ट, क्रिटिकल रीजनिंग. दिस इज समथिंग जहां पर आई गेस कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, राइट? एंड सी 7 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस एंड 4 क्वेश्चंस. एंड कौन से टॉपिक से क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ. क्रिटिकल रीजनिंग में बेसिकली क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एजम्पशंस, यू कैन एक्सपेक्ट एजम्पशंस बेस्ड क्वेश्चन. सेकंड, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट. बेसिकली ये 4 टाइप यू कैन एक्सपेक्ट. एजम्पशंस,
argument, courses of action, and one more thing is conclusion based questions. So basically अभी इसके लिए आपकी टॉपिक टेस्ट यू हैव राइट. अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना है तो यू हैव 2-3 days. वी हैव टॉपिक टेस्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. इन सारे टॉपिक्स के इंडिविजुअल टॉपिक टेस्ट वी हैव राइट. सो आई गेस दे आर ऑलरेडी अपलोडेड इन योर PSIS अकाउंट. ठीक है, तो डू प्रिपेयर दोज क्वेश्चन. सो आपका ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो इसमें मुझे लगता है ये आपके लिए मॉडरेट पार्ट हो सकता है, बिकॉज most of you not feel comfortable with this part. I know, critical reasoning. We can consider this topic in moderate part, right? Then we have set theory. You'll find simple question of set theory, right? There are 100 people in a locality. 50 of them read the Times of India, then Economic Times, and then Hindustan Times. Simple question on the basis of that set theory you can expect, right? केवल और केवल सेट थ्योरी से क्वेश्चन 2019 में आया था, 20 एंड 2021 में नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट. सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, राइट. डेटा सफिशिएंसी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. डेटा सफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एज यू कैन सी 3 क्वेश्चंस इन 2021 and 3 questions in 2019. So डेटा सफिशिएंसी को ना इजी नहीं कंसिडर कर सकते, ये इजी टू मॉडरेट होने वाला है, राइट. इसमें बहुत इजी क्वेश्चन नहीं होने वाला है. इसका जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल थोड़ा सा बेटर होगा. अगर आपने हमारे क्लास हैंडआउट से आपने जो मॉक्स देखे हैं रोहतक में, उसकी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते तो उसी लेवल के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट डेटा सफिशिएंसी, राइट. ये वाला पार्ट मॉडरेट हो सकता है. नाउ वेन डायग्राम एंड सिलॉजिज्म, ये बहुत इजी एंड डुएबल होने वाला है. सी 5 questions. So this year also you can expect 4 to 5 questions from this topic, and this is very very important topic for your exam, Venn diagram and syllogism, right. I hope कि ये आप सब ने अच्छे से prepare कर लिया होगा Venn diagram and syllogism, this particular topic, right. And you can expect 4 to 5 questions from this topic. अभी भी अगर you have any doubt in any of these topics, so you have time of 1 or 2 days. So do revise all the concepts of these topics. आपको दिख रहा है कौन important है, like critical reasoning is important topic, like syllogism is important topic. Next, arrangement. So arrangement कौन सा आएगा? You'll find 1 question of complex arrangement. 1 question from this particular topic, complex arrangement आपको मिलने वाला है, right? Complex arrangement, but बहुत ज्यादा difficult नहीं होगा, right? ये क्वेश्चन डुएबल होगा, बट क्या करना है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में, जैसे ड्यूरिंग क्लासेस भी मैंने आपसे डिस्कस किया, कभी भी लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट को बेसिकली कैसे अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट राउंड में डू दोस क्वेश्चन इजी एंड मॉडरेट, जो आपको देख के सी हमें पता चल जाता है क्वेश्चन को रीड करने के बाद कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, और इसमें कितना टाइम लगने वाला है. फर्स्ट राउंड में कभी भी हमें उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो मुझे लगता है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 1 minute, राइट. एंड मुझे रीड करके समझ आ जाता है कि मेरे को ये क्वेश्चन हो सकता है या नहीं. फर्स्ट टाइम राउंड में आपको वही सारे क्वेश्चंस करने. लेट्स से 40 में से आपने 25 क्वेश्चंस ऐसे जो कर लिया आपने फर्स्ट राउंड में. नाउ यू आर लेफ्ट विद 15 क्वेश्चंस, एंड जो भी टाइम बचा है उस टाइम में अब अपना टाइम आप खराब कर सकते हो, राइट. बिकॉज क्या होता है कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में जनरली क्या होता है कि हम लोग 5 मिनट 6 मिनट तक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में खराब करते हैं, फिर हमें रियलाइज हो रहा होता है कि भाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है. देन वी थॉट लाइक कि चलो छोड़ देते हैं, बट वो 5, 6, 7 मिनट जो हमारे खराब हो गए वो अभी तो मैं खराब नहीं कर सकता है ना, बट जब मेरा फर्स्ट राउंड हो गया मैं वो सारे क्वेश्चंस कर चुका हूं जो मेरे को आते हैं. नाउ आई हैव टाइम, अभी मैं अपना टाइम खराब कर सकता हूं. सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन के लिए आप अपना टाइम बचा के रखिए. एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट से क्वेश्चन तीनों ईयर में हमारे पास था, 2019, 20 एंड 21, राइट. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज मॉडरेट, ठीक है. नाउ सीक्वेंस, सीरीज, ऑर्डर, रैंकिंग, ठीक है. एज आई टोल्ड यू, ऑर्डर एंड रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सीरीज से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है. सीरीज का क्वेश्चन जो लॉजिक होगा वहां पर वो मॉडरेट डिफिकल्टी का हो सकता है. ड्यूरिंग क्लासेस भी मैंने आपको डिस्कस किया था, कुछ कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम ड्यूरिंग एग्जाम कभी समझ ही नहीं सकते कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, राइट. लाइक लास्ट ईयर GMAT में 1 क्वेश्चन वर देयर कि जनवरी 2021
सॉरी फैब 2021, मार्च 2021, नवंबर 2021, दिसंबर 2021, इस पे पूछा था ऑड वन आउट। एंड व्हाट वाज द लॉजिक की फर्स्ट 3 का फर्स्ट डे वाज मंडे एंड थर्ड का वेडनेसडे। अब आपके पास वहां कैलेंडर तो है नहीं, है ना। सो ऐसे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन नंबर दिस पार्ट सीरीज पार्ट। सो वो डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। जो आपके माइंड में बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है वो एक पार्ट हो सकता है, डिफिकल्ट वाला पार्ट, उसको आप स्किप कर सकते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारे डुएबल होने वाले हैं, इजी होने वाले हैं। मेक श्योर कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आपने हमारी क्लासेस की है, वो कॉन्सेप्ट सारा देखा है, तो उसके बाहर कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं, राइट। नाउ नॉन वर्बल रीजनिंग। So non-verbal reasoning में ना 2021 में भी one question were there and 2019 में भी ये question कैसे था? Just mirror image. One word is given, find its mirror image. One word is given, find its which of the following is its water image. So mirror image and water image पे based question. So I think ये तो सबके लिए बहुत easy होता है ना? Mirror image means there is vertical mirror. Water image means what? There is horizontal mirror. आपको अकॉर्डिंगली फाइंड करना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर इमेज और मिरर इमेज। और इस पे यू कैन एक्सपेक्ट कि और भी क्वेश्चन नॉन वर्बल पे हो सकता है किसी और टाइप का, बट यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं होने वाले, राइट। सो इनपुट आउटपुट, दिस इज वन टॉपिक जो जनरली नहीं पूछा जाता है, बट 2019 में वन क्वेश्चन वर देयर एंड वो क्वेश्चन बहुत ईजी था। वो क्वेश्चन जस्ट in input some numbers were given, आपको बोला था इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है। शिफ्टिंग वाले मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप शिफ्टिंग एंड अरेंजमेंट का डिफरेंस अभी सभी को समझ आता है इनपुट एंड आउटपुट में, बिकॉज आपने बहुत सारी क्लासेस इनपुट आउटपुट की है एंड एक लाइव भी किया। अगर इनपुट आउटपुट में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, डू वॉच दैट वीडियो इन आवर प्लेलिस्ट ऑफ प्रथम टेस्ट प्रेप यूट्यूब चैनल, लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट, ठीक है। सो दिस इज वन टॉपिक, कम चांसेस है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम चांसेस है इससे क्वेश्चन आने के। जनरली लास्ट 3-4 ईयर में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, बस दिस वाज द एग्जाम 2019 में जहां पर इससे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2021 नो क्वेश्चन। सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट एक बार रिवाइज आप कर सकते हैं। क्यूब्स एंड डाइस एंड ओके, क्यूब एंड डाइस। सो इसमें डाइस का जो क्वेश्चन होगा जनरली वो इजी क्वेश्चन होगा। आपने लास्ट ईयर भी डाइस से देयर वाज वन क्वेश्चन। क्यूब का क्वेश्चन यू कैन कंसीडर, अगर क्यूब का क्वेश्चन आता है तो वो आपके एग्जाम में डिफिकल्ट होगा। ये मैंने ड्यूरिंग क्लासेस भी आपको बताया, अगर क्यूब से क्वेश्चन आएगा तो जनरली वो डिफिकल्ट साइड में होता है, ठीक है, बट डाइस का क्वेश्चन इजी होगा। सो दिस इज द ओवरऑल पेपर एनालिसिस फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। यू कैन सी मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमारे आपको मींस 80% टॉपिक्स यूल फाइंड जो हमने क्लासेस में डिस्कस किए, ठीक है। 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली उसी तरीके के मिलने वाले जिस तरीके के आप मॉक्स में कर रहे हैं। अगर मॉक्स में आप लॉजिकल रीजनिंग अच्छा कर पा रहे हो मींस उससे लेवल थोड़ा सा कम होगा, उससे ज्यादा लेवल नहीं होने वाला डिफिकल्टी, राइट। सो अगर मैं डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग देखूं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट के लिए कि क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग में, कितना अटेम्प्ट आपके लिए गुड अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द पार्ट जो जनरली और सेक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होगा, राइट। तो मेक श्योर अगर आपका वीएम स्कोर कम हो जाता है या क्यूएम स्कोर कम हो जाता है तो उसको आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ बैलेंस कर सकते हो। दिस इज वन पॉइंट, राइट। सो मेक श्योर कि इसमें आपने अपने अटेम्प्ट ज्यादा करने, और इसमें देखो ऐसा भी नहीं होता लॉजिकल रीजनिंग इज देयर आर ओनली फ्यू टॉपिक लाइक क्रिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, ऐसे कुछ टॉपिक है जहां पर आप के मिस्टेक के चांसेस है। अदरवाइज कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन एंड ऑर्डर रैंकिंग, इनमें अगर इफ यू आर गेटिंग आंसर इन योर ऑप्शंस ना, दैट मींस आप ठीक कर रहे हो, राइट। यहाँ पर आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। देयर आर ओनली फ्यू टॉपिक्स लाइक अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो गया एंड आंसर्स आपके ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, तो दैट मींस आपने जो अरेंजमेंट फॉर्म किया वो 90% चांसेस है करेक्ट है, राइट। सो यहाँ पर ना एक्यूरेसी आपकी ज्यादा बेटर होनी चाहिए, राइट। लेट्स तो अकॉर्डिंग टू मी आपने कितना यहाँ पर मिनिमम अटेम्प्ट करना चाहिए, मिनिमम 32 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट। 32 क्वेश्चंस विद 90% एक्यूरेसी, with
90% एक्यूरेसी, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन नहीं होता, राइट। एंड किसी बच्चे ने पूछा कि पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, अगर यू आर अलाउड टू जंप, तो आप पहले उस सेक्शन से स्टार्ट करो जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, राइट। कभी भी उस सेक्शन से स्टार्ट नहीं करते कि जो आपको डिफिकल्ट लगता है। आपको क्या होगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो इजी क्वेश्चन है वो भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाने वाले हो, राइट। तो कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए अगर मुझे चॉइस मिलती है कि मैं किससे स्टार्ट करूं, तो आई विल स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग और क्यूए, बिकॉज मेरा लॉजिकल रीजनिंग एंड क्यूए स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट। मैं वीए से नहीं स्टार्ट करूंगा, राइट। ऐसे ही किसी वीए की फैकल्टी को अगर चॉइस मिलेगी तो डेफिनेटली स्टार्ट विद वीए पार्ट, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। आपने बहुत बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से बताया। एंड 32 इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज पर यू। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो, कि अगर आप क्यूए में और वीए में अगर लैग कर जाते हैं किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से, तो आप बेसिकली एलआर में उसको मेकअप कर सकते हैं। सो एलआर, इसलिए मैंने कहा ना कि बच्चे कहते हैं सर एलआर है तो जान, क्योंकि अगर 2-4 क्वेश्चंस अगर यू आर फॉलिंग शॉर्ट इन अदर टॉपिक्स लाइक क्यूए और वर्बल एबिलिटी, you can easily make up for those 2-3 losses, 2-3 question losses in the LR section. So great, sir, thank you so much. So to sum up the sum up the entire discussion, sir, can you just allow me screen sharing? Okay, if I sum it up, तो मैं एक चीज यहाँ पे just let me quantify our discussion कि हम लोगों ने डिस्कशन में ओवरऑल क्या करा। So far as the QA is concerned, जहां तक QA की बात है, 40 क्वेश्चंस हैं, and as per ma'am 32 questions, you attempt 32 questions, that will be a good attempt, right? Now in this your accuracy has to be between 87 to 88%, as ma'am said. That brings us to 28 questions correct. These are the questions which are correct. So with 28 questions your marks is 112, right? And क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, so -4, which is 108. So ma'am, can I take your permission and can I say that 100 plus still will be a safe score? Absolutely, yes, sir. Out of 160? Out of 160, 100 plus, it's doable, it's manageable. Absolutely manageable for quant section for IIM ROHTAK. Great. Thank you, ma'am. Now, verbal ability is concerned. प्रवीण सर ने कहा 40 क्वेश्चंस, और प्रवीण सर ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपको वो जो 6 क्वेश्चंस है ना, इस 6 क्वेश्चंस में जो आपको सबसे ज्यादा ट्रबल कर सकते हैं, जो आपके टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, जिनसे आपको बचना है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो दीज आर ट्रैप क्वेश्चंस, अननेसेसरी इन क्वेश्चंस में नहीं फंसना है। सो एज पर प्रवीण सर, he says that 40 questions में से 31 question if you attempt, it's a good attempt, और इसमें आप 80 to 85% accuracy आपकी होनी चाहिए। Let me take the lower limit. So let's assume that आप 80 to 85% के बीच में आप accurate हैं, तो your 25 questions are correct, right? 25 questions are correct. That brings 100 marks. अब क्योंकि आपके 6 नंबर कम हो गए, so -6, that is 94. So that brings me somewhere close to 95. Sir, out of 160, if somebody is scoring 95 marks in English section, will that be a good score? Absolutely, yes, sir. Absolutely. And let me tell you, this is a practical score. एक बार LR कहा जाए, फिर हम 1 मिनट लेके सर डिस्कशन करेंगे उसके बारे में भी, why this is a practical score. Sure. Logical reasoning में जैसे कि गिरीश सर ने कहा कि 32 is a out of 40 questions में 32 questions is a good attempt. And उन्होंने एक चीज कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, के हमारे QA फैकल्टी, हमारे वर्बल एबिलिटी के फैकल्टी जो है एक्सपर्ट हैं, they allow 85% accuracy. I mean 15% in 15% cases you can go wrong, but LR में as sir said, क्योंकि सारे questions मैच करते हैं ऑप्शन से, और उसमें आप 90-95% श्योर होते हैं कि जो मैंने बनाया वो सही है, राइट? सो एक्यूरेसी हैज टू बी गुड। तो सर ने यहाँ पे दिया है आपको लिबर्टी 10% का, इन 10% ऑफ द केसेस यू कैन गो रॉन्ग। सो 32 माइनस इसका 10% 3.2 होता है, बट लेट मी अज्यूम 4 क्वेश्चंस, सो 32 में से 28 करेक्ट है। सो दैट आल्सो सेम थिंग, इट ब्रिंग्स मी डाउन टू 108, राइट? लेट मी अज्यूम 108 को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाऊं और मैं इसको 100 कर देता हूं, 100 out of 160. So that brings 100 marks in maths, 95 marks in
This is QA 100 marks, 95 marks in verbal ability, and again 100 marks in logical reasoning. And that brings us to 295 is the overall score. Now I would be asking all the three faculty members, sir, is 295 an absolutely safe score out of 480? So let me start with this. Yes. It's a beautiful score. It's a beautiful score when we talk about IIMs, right? I'm sure, Vineet sir, we have been taking such sessions long time back and where we discuss certain pointers here कि अगर real time हम papers को देखते हैं तो ये 50 to 60% marks होते हैं. That means you solve only 60% of with 95+% accuracy, right? That's what you solve there. So that means what I'm saying here is अगर मैं 60%, 50, 60%, 59, 60% निकालता हूँ, that comes out to be 280. मैं 285 कर लेता हूँ, right? Let me say 285. So that is what the high limit. While here we are saying 295, right? So that is what we get. अगर किसी का 295 आ रहा है, it's a beautiful one. Let me assume कि हर चीज में एक एरर होती है. अगर वो एरर भी हम इसके अंदर डाल दें, फॉर एग्जांपल क्वांट्स में करते हुए आंसर गलत उसने मैच कर लिया, या एलआर में था इजी है, जैसे सर ने कहा इजी था, देयर माइट बी सम स्टूडेंट हु माइट कम इनटू द पिक्चर इजी है, चलो यही आंसर होगा विदाउट इवन लुकिंग इनटू अदर कंसीडरेशंस, राइट? तो अगर मैं मार्क करूं तो ये वही मार्क्स बैठते हैं जो प्रैक्टिकली अचीवेबल है, गुड है, एंड दैट इज प्राइमरली फॉर द मासेस. ग्रेट. सो गिरीश सर, अगर जिस स्टूडेंट को हम लोग ट्रेन करते हैं, अगर वो स्टूडेंट 295 आउट ऑफ 480 लेकर के आता है, तो सर मुझे एक बात बताइए, आपको खुशी तो बहुत होगी. Yes, so sir, happy absolutely. because ultimately now the second phase, his selection is based on PI and his past academics, but we are rest assured that कि उसको written में कोई रोक नहीं सकता सर. मतलब इंटरव्यू का कॉल आने से तो कोई रोक नहीं सकता. सर 275 is a safe score. I think ऐसा होना चाहिए. अगर previous year pattern को देखें 275 is a safe score. अगर safe score से if my score is 20 plus, it will definitely मेरा score बहुत ही अच्छा. Vidhi ma'am, your thoughts on this? Upper limit score, and this is upper limit where we talk about minimum the maximum score. So this is the maximum safest score that a student can secure in any of the entrance exam, but obviously we're talking about Rohtak here. So for Rohtak, this is the maximum upper limit for the safest score, 295, and it is achievable. बार बार मैं यही कह रही हूँ, doable है, manageable है, achievable score है. Okay, so just to conclude now, I'll be concluding on after saying two things. पहली चीज कि ये जो डेटा है इसको मैं थोड़ा सा सब्सटैंशिएट कर देता हूँ, और जैसे कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने बताया कि जैसे 275 इज अ गुड स्कोर. अब देखिए, अगर ये प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा हो तो सर, कैन यू सी दिस प्रेजेंटेशन? Yes, sir, absolutely. So in 2019, when the cutoff was 256 out of 480, it is approximately 53 point something percent. 53% मैं इसको मानता हूँ. 53% was the cutoff. अब यहाँ पे basically the number of students who gave the test, who appeared in the test was 6045, और इसमें से approximately 815 students को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था. तो जब 6000 बच्चों ने एग्जाम दिया था तो 53% was the cutoff, that was 256, right? Now लास्ट ईयर की बात करूं, अगर मैं 2021 की बात करूं, तो यू कैन सी दिस दैट 9000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन. मींस 6000 से 9000 यानी 3000 बच्चे बढ़ गए द एग्जाम टेकर्स, एंड 3000 स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड. 6045 से 9187 है. यहाँ पे ज्यादा लोगों को इंटरव्यू का कॉल आया था, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. People who got the call for interview was 908, but the cutoff था वो 256 से बढ़ के 265 हो गया. So 265 out of 480, that is actually approximately 55%, right? 264, 55%, 264 होता है, ये 265 है, 55%. Now हम ये अज्यूम करते हैं कि IIM रोहतक की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. ऑलरेडी 3 साल हो चुका है, चौथा बैच शुरू होने वाला है जो 2022 से 2027 तक चलेगा. Let me extrapolate and let me assume that इस बार अगर सपोज कीजिए 12 से 15000 बच्चों ने एग्जाम दिया, राइट? कट ऑफ ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन वो 265 से बढ़ के 295 तो नहीं होगा, ये फॉर श्योर है, ये तय है, राइट? बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो लास्ट ईयर के फिगर में 9 प्लस ऐड हुआ था, यहाँ पे हम 10 नंबर और बढ़ा देते हैं. सो लेट अस अज्यूम 275 to 280. So if you are in this bracket 275 to 280, obviously you will be getting a PI call as per what we think, right? ये पहली चीज
तो इसको याद रखिएगा, अगर आप 295 लेकर के आते हैं, बल्ले बल्ले, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट। ये चीज है। दूसरी चीज आई वुड लाइक टू कंक्लूड, जैसे कि गिरीश सर ने भी बताया कि सर व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। गिरीश सर ने बहुत सही कहा कि जिस सेक्शन में आप कंफर्टेबल हैं, प्लीज स्टार्ट विद दैट सेक्शन। एक चीज हमेशा याद रखिए, आप वहां पे अपने ज्ञान, अपने एजुकेशन का और अपने हाउ शार्प यू आर उसका प्रदर्शन करने नहीं जा रहे। यू आर नॉट देयर टू शो योर नॉलेज, यू आर देयर टू स्कोर मार्क्स, यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर एफर्ट, राइट। उतने ही समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आना है, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी स्मार्ट, ठीक है। आपको अननेसेसरी क्वेश्चन से उलझना नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, किसी भी सेक्शन का हो, उस क्वेश्चन को छोड़िए, वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपके मार्क्स एक्चुअली आ सके। यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर मार्क्स, यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर एफर्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो जिस सेक्शन में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जो आपका स्ट्रेंथ है, प्लीज attempt that section first, right? That is the only message from our side, right? So thank you so much. This was all from our side, right? And all the faculty members, Praveen sir, बहुत धन्यवाद sir for your deeper insights. Thank you so much, ma'am. Right? And Girish sir, thank you so much. It's always a pleasure talking to you people, right? Especially हमारे ऑफिस में तो बात होती है, but YouTube live पे it's all the more fun. It's all the more exciting. So thank you so much. Thank you so much. This was all from my side. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। जितने भी यहाँ पे IPM रोहतक का एग्जाम देने वाले हैं 26 को, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाइए, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिए, टेंशन मत लीजिएगा, तनाव मत लीजिएगा। अगले 2 दिन बचे हैं, इसमें आप रिवाइज कीजिए एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड गिव योर बेस्ट शॉट इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।